All right, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our first online session of the semester fall 2025. The course is BMB 3505 Molecular Biology, offered in the Department of Microbiology, Mirpur University of Science and Technology. The topic which we have earlier started in our last class was DNA replication in bacteria, and this particular handout is being referred from the book Microbiology by Prescott, and the edition is, I assume, of 2016. कुछ चीज़ों को मैं रिकॉल करूँगा and then we will start proceeding to the other sections of this topic. So particularly DNA replication in bacteria, इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमने देखा था कि सेमी कंजर्वेटिव होती है, मीन्स कि इसमें हमारे पास जो डॉटर स्ट्रैंड्स बन रहे होते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड जो पेरेंट या हमारे पास इनिशियल मॉलिक्यूल होता है उसका कंजर्व रहता है, एंड देन अ न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टू द पेरेंट स्ट्रैंड. सो हमारे पास जो न्यूली डेवलप्ड टू डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें एक स्ट्रैंड will be the exact parent strand, and uh, one will be form of the new daughter strand. बाकी इसके जो बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था वो यही था कि इस पे बेस पेयरिंग होती है शार्गोफ रूल के मुताबिक, जिसमें एडेनिन बेस पेयर्स विद थाइमीन एंड ग्वानिन बेस पेयर्स विद साइटोसिन्स. प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स का आपस में बेस पेयरिंग होती है. एटी के दरमियान में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और सी के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. In bacteria, replication rates approaches 750 to 1000 base pairs per second. Most of our uh, discussion in this section is related to the E. coli. ठीक है, तकरीबन इतनी स्पीड में इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स एड अप हो रहे होते हैं इन अ न्यूली synthesizing strand. Bacterial DNA replication initiates from a single origin of replication. अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे तो यहाँ हमारे पास फिगर ए में एक डीएनए का सिंगल सर्कुलर क्लोज्ड मॉलिक्यूल है जिस पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिससे ही हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्म के रेप्लिकेशन बबल बनता है, एंड देन टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड. और फिगर बी में ये हमें एग्जैक्टली बताया जा रहा है कि किस तरीके से थीटा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है व्हाइल सिंथेसाइजिंग अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड. Till now we have 27 students. Kindly inform all students, make sure to be available and present during the class session. Replisomes contain DNA polymerases and other proteins needed for DNA replication. DNA replication is essential to organisms, and a great deal of effort has been devoted to understanding its mechanism. हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स अपने इनिशियल प्रिलिमिनरी क्लासेस में पढ़े थे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जानते होंगे, जिनमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप्स हैं, पाथवेज हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इसलिए हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. देयर आर अदर एसेसरी metabolic pathways
For example, some of the bacteria have a flagella for its locomotion while others do not. तो इस तरीके से हम फ्लैजिला को एज एन एसेंशियल प्रोटीन समझकर बैक्टीरिया की सेल साइकिल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो इसलिए हम सिर्फ उन्हीं पाथवेज को फुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ड्यूरिंग the examination or during the research being done on the bacteria के जो कि essential है for the survival of the host organism. The replication of E. coli DNA requires at least 10 proteins that form a large complex in the DNA called the replication. ठीक है, टेबल 13.1 को हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मैं इसको ओपन करूं 13.1 में कंपोनेंट्स ऑफ इकोलाई रेप्लिकेशन मशीनरी जिसको रेप्लिजोम भी कह रहे हैं, कौन कौन सी प्रोटीन है. अच्छा, इसमें सिर्फ प्रोटीन्स मेंशन है. इन सब इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है दैट इज द डीएनए इटसेल्फ. ठीक है, जिससे रेप्लिकेट होना है तो उस डीएनए मॉलिक्यूल पे आके कौन कौन सी प्रोटीन्स बाइंड करेंगी. वी हैव इनिशिएटेड प्रोटीन, हेलिकेज, helicase loader, DNA gyrase, single strand DNA binding proteins, primase, DNA polymerase 3 holoenzyme, polymerase 1, ligase, TUS and topoisomerase 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रोटीन्स और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं हमारे पास कि कौन से स्टेज पे कौन सी प्रोटीन आके क्या रोल प्ले करेगी. In general, the archaeal replication machinery is more similar to the eukaryotic machinery than it is to the uh, prokaryotes. Despite these differences, the overall process of DNA replication is similar in all organisms. आर्कियाई, आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर पता होगा, एक थर्ड कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. दीज वर आल्सो प्रोकैरियोट्स. एवोल्यूशनरी लिंकेज में ये हमारे पास काफ़ी डिस्टेंटली लोकेटेड है विद प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसलिए इनको एक थर्ड कैटेगरी ऑफ लाइफ में कैटेगराइज किया जाता है. बट इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट से मिलती हैं कुछ यूकैरियोट्स से. When the replosome enzyme called the DNA polymerase catalyzes the DNA synthesis, all known DNA polymerases catalyze DNA synthesis in the 5' to 3' direction, and the nucleotide to be added in a DNTP, often referred to simply as deoxyribonucleotide transfer triphosphates और deoxyribonucleosides. ठीक है, एक तो एक चीज़ ये कि 5' to 3' में ऐड हो रही है. सेकेंडली डी एन टी पीज आके ऐड होंगे. डी एन टी पीज रेफर टू द 4 टाइप्स ऑफ deoxyribonucleotides are linked by phosphodiester bond formed by a reaction between the hydroxyl group at the 3' end of the growing DNA strand and the phosphide closest to the 5' carbon. फिगर 1310 इसको हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे कर रहा है. ये हमारे पास एक डीएनए ग्रोइंग स्ट्रैंड 5' टू 3' हमारे पास. ठीक है, और इस 3' पे आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे आके ये इनकमिंग डीएनटीपी ऐड हो रहा है जिसका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है. एंड देन ये फॉस्फेट ग्रुप इस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है और फिर एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट हो जाता है.
This energy needed to form the phosphodiester bond is provided by the release of a terminal 2 phosphate as a pyrophosphate. From the nucleotide that is added. The pyrophosphate is subsequently hydrolyzed to two separate phosphates. Thus, the deoxynucleotide triphosphate, यानी कि जो हमारे पास चार टाइप्स हैं, डी ए टी पी, डी सी टी पी, डी जी टी पी या डी टी टी पी, serve as a DNA polymerase substrates, while the monophosphates are incorporated into the growing chain. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के लिए इनकमिंग चीज़ क्या है? ट्राइफॉस्फेट्स। और देन इसके बाद जब ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू मोनोफॉस्फेट, वो मोनोफॉस्फेट ग्रोइंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड में इंकॉर्पोरेट हो रहा है। DNA polymerase needs three things to catalyze the DNA synthesis. The first is a template, which is read in the 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन सिंथेसिस जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, and is used to direct synthesis of a complementary DNA strand. The second is a primer, which is in RNA strand or in a DNA strand to provide a free 3 prime hydroxyl group to which the nucleotides can be added. The third is the pool of the 4 DNTPs. जब हम आगे चल के इसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन विच इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको गो थ्रू करेंगे, देन उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से यही तमाम कंपोनेंट्स मोर और लेस रिक्वायर्ड होते हैं इन परफॉर्मिंग द पीसीआर। E. coli has 5 different DNA polymerases. 1 to 5. DNA polymerase 3 plays the major role in replication. Although it is assisted by the DNA polymerase 1, polymerase 3 holoenzyme is a multifunctional enzyme complex within the replizome 1311. सो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 होलोएंजाइम की डायग्राम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हमारे पास एटलीस्ट ब्लू, रेड एंड येलो 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको किया गया है। क्लैंप लोडर, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन वी हैव कोर एंजाइम एंड बीटा क्लैंप। The holoenzyme consists of 3 core enzymes, each composed of 3 different proteins: alpha, eta, theta in gold, and several other proteins. Each core enzyme is associated with a beta clamp in red, which tethers DNA template to the core enzyme. The clamp loader in blue is a complex of 6 proteins that load the beta clamp onto the DNA. ठीक है, हमारे पास जो एक क्लैंप बीटा क्लैंप प्रोटीन है, क्लैंप लोडर है, उसके अलावा एक कोर एंजाइम है, ये तमाम कंस्टिट्यूट होते हैं टू फॉर्म अ डीएनए पॉलीमरेज 3। Within the holoenzyme, there are 3 core DNA polymerases. Each core polymerase binds a strand of DNA and is responsible for catalyzing the DNA synthesis and proof reading the product to ensure fidelity of replication.
Associated with each core enzyme is a subunit called the beta clamp that tethers it to the template DNA. ठीक है। क्लैंप और क्लैंप लोडर का मकसद यही है कि वो जो पॉलीमरेज है उसको बाइंड करवाए रखें with the template DNA molecule at the center of the whole enzyme, and represented by an octopus-like structure in the figure 13 is the clamp loader, a protein complex responsible for loading the beta clamp onto the DNA. Two of the core enzymes replicate one of the DNA strands and the third replicate the other strand. ठीक है, दो कोर एंजाइम्स एक स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करेंगे और जो तीसरा है वो दूसरे स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करेगा। इसके अलावा हमारे पास हेलिकेजेस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, टोपोइसमरेजेस हैं जिनका फंक्शन हम आई थिंक लास्ट क्लास में काफ़ी इन डिटेल से देख चुके थे। प्राइमेस का भी हमने देखा था कि प्राइमेस एक शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड को एड अप करवाता है एंड देन उसी से आगे जो न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड है वो ग्रो अप होती है। Primase and several accessory proteins forms a complex called the primosome, is another important component of the replizome। ठीक है, रेप्लिजोम का एक कंपोनेंट है प्राइमोसोम जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्राइमेज एंजाइम होता है। The DNA polymerase enzyme synthesizes DNA in the 5' to 3' direction. Therefore, one of the DNA polymerase core enzyme is able to move in the same direction as the replication fork and synthesize the DNA continuously as the DNA unwinds ahead of the core enzyme. This strand is called the leading strand, figure 1312। सो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन हमारे पास एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक लैगिंग स्ट्रैंड न्यू फॉर्म हो रहा है और चूँकि दोनों स्ट्रैंड्स पे एक ही पॉलीमरेज एंजाइम ने एक्ट करना है तो इसलिए इस पॉलीमरेज एंजाइम के दो कोर एंजाइम्स तो अपनी डायरेक्शन में ही उसको सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन जो तीसरा है उसके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ आ जाती है कि अब उसने जिस तरफ रीडिंग करनी है उसी तरफ उसने सिंथेसिस भी करनी है, लेकिन सिंथेसिस तो 5' टू 3' होगी, तो इसलिए वो शॉर्ट सेगमेंट्स को सिंथेसाइज करवाएगा जिनको हम लेटर ऑन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स डिक्लेयर करेंगे। The other strand, called the lagging strand, cannot be extended in the same direction as the movement of the replication fork because there is no free 3' hydroxyl to which a nucleotide can be added. As a result, the lagging strand is synthesized discontinuously in the 5' to 3' direction, in the direction opposite of the movement of the replication fork, and produces a series of fragments called the Okazaki fragments after their discoverer, Okazaki, which died at the age of 45.
Discontinuous synthesis occurs as the primase makes many RNA primers along the template strand. DNA polymerase 3 then extends these primers with the DNA, and eventually the Okazaki fragments are joined to form a complete strand. Thus, while the leading strand requires only the RNA primer to initiate the synthesis, the lagging strand has many RNA primers that must eventually be removed. ठीक है, हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के दरमियान में जो मिसिंग स्पेस है दैट इज बीइंग कंप्लीटेड बाय दीज आरएनए प्राइमर्स. तो लीडिंग स्ट्रैंड पे सिर्फ स्टार्टिंग में ही एक आरएनए प्राइमर अटैच होगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बाद एक आरएनए प्राइमर आके अटैच होगा. Okazaki fragments are about 1000 to 3000 nucleotide long in bacteria and approximately 100 nucleotides long in eukaryotic cells. The replication fork is where the complex events of DNA synthesis occur. 13.13. So events में क्या आ जाता है, are numbered and move in a counterclockwise direction. Components of the replisomes are responsible for synthesis of both leading and lagging strands. The arrows show the direction of movement of lagging strand synthesis and the replication fork. Okazaki fragments are eventually joined together by the RNA molecules. It's starting from the one we have this helicase unwinds the parental DNA and one strand is uh, coated with single stranded DNA binding proteins. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर इज द हेलिकेस. ठीक है, ये जो दो स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि इस ग्रीन कलर्ड इंजाइम हेलिकेस ने इसको अनवाउंड कर दिया है, और ये जैसे ही अनवाउंड हुआ है अपने टेम्पलेट डीएनए से ये डिटैच हो गया नाउ. अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स ये येलो शेडेड में है आके इस ओपन स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर गई हैं. When a sufficient length of the DNA is unwound, primase synthesizes an RNA primer. The clamp loader then loads a clamp onto the template DNA to tether a core enzyme to the strand. Lagging strand synthesis is then begins. Is discontinuous and generates Okazaki fragments. Two core enzymes functions in lagging and synthesis, although it is unknown if they do simultaneously or as shown here. ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि जो ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ बने. कुछ कुछ साथ साथ भी बन सकते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस या अल्टरनेटिवली भी सिंथेसाइज हो सकते हैं. अब ये हमारे पास जो एक डीएनए पॉलीमरेज 3 का कोर एंजाइम है, वो इन्वॉल्व है इन द synthesis of 5 prime to 3 prime leading strand, and then टू कोर एंजाइम्स जो कि क्लैंप लोडर के साथ अटैच हैं वो इन्वॉल्व हैं इन क्रिएटिंग दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन दी ग्रोइंग लैगिंग स्ट्रैंड.
Notice that the lagging strand core enzyme on the left is approaching an already completed Okazaki fragment. When the core enzyme reaches the fragment of uh, the core enzyme will be released from the DNA template. The third core enzyme of the DNA polymerase for enzyme moves in the same direction as the replication fork और वो फिर लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस परफॉर्म करता है. ये वो तमाम मैकेनिज्म हमारे पास विद इन स्टेप्स लिखे हुए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है. In E. coli, DNA replication is initiated at a specific called the ORI-C locus for origin of replication, chromosomal replication. This site is AT rich. Recall that the adenine paired with thymine using only two hydrogen bonds. So AT rich segments of the DNA become single stranded more readily than the GC rich regions. The bacterial initiated protein DNA-A is responsible for triggering the DNA replication. DNA-A protein bind regions in the ORIC throughout the cell cycle. But to initiate a replication, DNA-A proteins must bind a new particular ORIC sequences. This presence of DNA-A at these sites recruits a helicase, usually the DNA-B helicase to the origin. द हेलिकेज अनवांट्स दी. ठीक है, वो हमने पिछला देखा है. प्राइमर फिर करता है परफॉर्म, आरएनए को सिंथेसाइज करता है. The lagging strand synthesis is particularly amazing because of the gymnastic feats performed by the holoenzyme. ठीक है, चूँकि वहाँ पे हमारे पास लैकिंग स्ट्रैंड में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे होते हैं, दो कोर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बिल्कुल नॉन सिंपल मैकेनिज्म रिफ्लेक्ट हो रहा होता है. इट मस्ट discard old beta clamps, load new beta clamps, and tether the template to the core enzyme with each new round of Okazaki fragment synthesis. All of this occurs as the DNA polymerase 2 is synthesized. The DNA after most of the lagging strand has been synthesized by the formation of Okazaki fragments, DNA polymerase 1 removes the RNA primers using its technique and unique ability to snip off the nucleotides at one at a time.
starting at the 5 prime end while moving towards the 3 prime end of the RNA prime. ठीक है, RNA पॉलीमरेज 3 ने मेजर रोल प्ले किया। अब मेजर रोल प्ले करने के बाद RNA 1 जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कंप्लीट करेगा RNA पहले प्राइमर्स को रिमूव करके। Thus, ability is referred to as 5 prime to 3 prime exonuclease activity. DNA polymerase 1 begins its exonuclease activity at the free 5 prime end of each RNA primer with the removal of each ribonucleotide. Uh, the adjacent 3 prime hydroxyl from the deoxyribonucleotide is used by the DNA polymerase 1 to fill the gap between the Okazaki fragments 13 14. सो 13 14 में आप देखिए कि हमारे पास जो ग्रीन शेडेड में ये रीजन है, ये हमारे पास आ जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, सॉरी हाँ, विद आरएनए प्राइमर, और इस प्राइमर को रिमूव होना है। सो DNA polymerase 1 removes the RNA primer and fills gap with DNA nick. Then the DNA ligase links Okazaki fragments by sealing the nick. ठीक है, और फिफ्थ पे क्या कहते हैं, फाइनली द ओकाजाकी fragments are joined by the enzyme DNA ligase which forms a phosphodiester bond between the 3 prime hydroxyl of the growing strand and the 5 prime phosphate of the Okazaki fragments 13 15. सो इस तरीके से हमारे पास वो जो गैप है वो फिल हो जाता है बाय द डीएनए स्ट्रैंड। Amazingly, DNA polymerase 3, like the DNA polymerases, except reverse transcriptase, has an additional function that is critically important, which is proofreading. Proofreading is the removal of a mismatched base immediately after it has been added. Its removal must occur before the next base is incorporated, and the epsilon subunit of the DNA polymerase 3 has the 3 prime to 5 prime exonuclease activity. This activity enables the polymerase coenzyme to check each newly incorporated base to see that if it forms stable hydrogen bond. In this way, mismatched bases can be detected. If the wrong base has been mistakenly added, the exonuclease activity removes it, but only as long as it is still at the 3 prime end of the growing strand. Once removed, holoenzyme breaks up and added the proper nucleotide in this place. DNA proofreading is not 100% efficient and is discussed in the hopefully next sections. The mismatch repair system in the cell's second line of defense against the potential harm caused by the incorporated or incorporation of the incorrect nucleotide. As we have seen, DNA polymerase 3 is a remarkable multi-protein complex with several enzyme activities. In E. coli, the polymerase component is encoded by the DNA E gene. Bacillus subtilis, a gram-positive bacterium that is another important experimental model, has a second polymerase gene called the DNA E. B S.
Its protein provide synthesizes the lagging strand. Thus, while the overall mechanism of DNA replication is highly conserved, there can be variations in the replosome components. Take a different proteins uh, which are referred as the orthologs, performing almost the same function but are present in different species, different genre. सो इसलिए एक जनरलाइज इकोलाई के डीएनए रेप्लिकेशन को हम फॉलो करेंगे, अदरवाइज वी नो दैट हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज़ में हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़म्स परफॉर्म हो रहे होते हैं. द प्रूफ रीडिंग एडिटिंग फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इस पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ सिंथेसाइज हो रहा है, वहाँ पे सी की बजाय एक एडेनिन इनकॉर्पोरेट हो चुका है. अब इस एडेनिन को रिमूव किया जाएगा एंड देन उस एडेनिन की जगह वहाँ पे एक ग्वानिन को रिप्लेस कर दिया जाएगा. ठीक है. सो 2 to 3 मिनट्स की हम ब्रेक लेते हैं, देन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. एक मकसद ऑनलाइन क्लासेस में हम कोशिश ये भी है कि मैक्सिमम कोर्स को कवर करें एंड देन हम इन टॉपिक्स को ऑन कैंपस क्लासेस में भी हम रिवाइज करेंगे. इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मैक्सिमम टॉपिक्स स्टूडेंट्स तक मौजूद हो जाएंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्हीं क्लासेस को रिकॉल कर सकते हैं while studying these specific sections. ठीक है. जस्ट 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन हम वापस क्लास को स्टार्ट करते हैं.
अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरी इन्फॉर्मेशन मिली है ऐसे कोई बात। मेरी लास्ट बात हुई थी इसी हिसाब से मैंने बात करी है, सारे ठीक हैं। तो आप उनके साथ नहीं मिला तो मुझे क्लास सेशन और सेमेस्टर की तीन चीज़ें बता दें। तो वो फिर कंट्रोलर ऑफिस से पूछते हैं कि क्या इशू है, उसको कहीं में लिखी जाएगी। All right, students, let's resume our class. So, uh, initiation and then extension. Yes, synthesis of new strand. इसके बाद आ जाता है termination of the replication requires steps to separate the daughter chromosomes.
In E. coli, the DNA replication steps when the replisome reaches a termination site, which is TER on the DNA. A protein called the TUS binds to the TER sites का नाम क्या है TER, and the protein is called TUS, and halts the progression of the replication forks. In many other bacteria, replication stops spontaneously when the forks the meat. Regardless of how fork movement is stopped, there are two problems that must be solved by the replisome. The first is the formation of interlocked chromosomes called the catenases. 1317. Catenases are produced when topoisomerases break and rejoin the DNA strands to ease the supercoiling ahead of their replication fork. The two daughter DNA molecules are separated by the action of other topoisomerases that breaks the both strands of the molecule pass the other DNA molecule through the break and then rejoin the strands. ठीक है, हमने ये टोपोइसोमरेजेस का फंक्शन भी देखा था कि किस तरीके से स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग में ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं. तो 1317 को अगर हम देखें, resolving the catenated and dimerized chromosomes. सो कैटिनेटेड क्रोमोसोम्स जब टू न्यूली फॉर्म्ड आए हैं तो आप देखिए किस तरीके से ये हमारे पास अगेन एक दूसरे के अंदर इंटरविंग्ड हैं. तो इस पे हमारे लिए ज़रूरी क्या होगा कि जो टोपस ब्रेजेस है वो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंड ब्रेक इंट्रोड्यूस बाय द टोपस अलोंग द पैसेज ऑफ द इंटैक्ट क्रोमोसोम थ्रू द गैप, और फिर हमारे पास ये सेपरेट हो जाते हैं. डायमराइज क्रोमोसोम इसमें क्या है कि ये जो टर्टस वाले सीक्वेंस है यहाँ पे जाके क्रॉसओवर के बाद ये भी सेपरेट हो जाते हैं. So these are two mechanisms in which the two newly formed DNA strands कैसे अपने आप से सेपरेट होते हैं. Linear chromosome ends must be protected during the replication. All eukaryotic chromosomes and some bacterial chromosomes are linear. In both cases, this poses a problem during the replication because all DNA polymerases synthesizes the DNA 5' to 3' direction from the primer that provides a free 3' hydroxyl. When the RNA primer for the Okazaki fragment at the 5' end of the daughter strand is removed, the daughter molecule is shorter than the parent molecule.
Over numerous rounds of the DNA replication and cell division, this leads to a progressively shortened chromosome. Ultimately, the chromosome loses its critical genetic information, which is lethal to the cell. This is called the cell replication problem, and a cell must solve if it is to survive. Eukaryotic cells have solved the end replication problem with the enzyme called the telomerase. As we discussed in the later sections, and of those bacteria having linear chromosomes, the best understood mechanism for solving the end replication problem is that used by the bacteria. इसमें क्या करते हैं बैक्टीरिया को हेयर पिन एंड फॉर्मेशन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जब हमारे पास ये बैक्टीरियाज डिवाइड हो रहे हैं तो एट द एंड हमारे पास ये टू लीनियर आ जाते हैं स्ट्रैंड्स और देन एंड पे वो दोबारा से एक हेयर पिन स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज क्लास 13.3 को हमने कंप्लीट किया है. नेक्स्ट सेक्शन को हम रिव्यू करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे रह गए, देन उसमें फिर हम उन्हीं को ही फोकस करेंगे. ठीक है, सो